I hope you all are doing well. Good morning, sir. Jain, sir. Good morning, Jayan. Have you checked your answers for the yesterday's test? Have you checked your essays? I think you must have got the evaluated answers. Yes, sir. Yes, sir. Checked. So how did you find it? I mean, did you understood what the problems were, where you guys could improve? Some Yes, of sir. you Yes. some of you have written, longer paragraphs. So it is always advisable to use short paragraphs. And particularly if it is an essay, you can also avoid writing in points. The point format is suitable when writing for an answer, like a 15-marker answer or a GS paper. But for an essay, even if it is a short essay, for example, the type it will be coming in the IB exam, you have to write very, 4-5 lines paragraph, write the 4-5 line paragraphs and try to build ideas, connect one paragraph to the other. So that's how you proceed. So we'll keep doing these exercises. We'll fine tune our skill set as we go forward. Okay. Let's start today's class now. Last topic we did yesterday was India's first center of excellence. कहाँ पे बना था ये? Without looking at the screen. Haryana, sir, Gurgaon. Yeah, it was in Gurugram, है ना? It was in Gurugram. ठीक है? Collaboration between Ministry of Ports and TERI. NCOEPGPS will be the nodal entity for this initiative. Okay. So what is ANDROTH? ANDROTH is one of the two anti-submarine warfare shallow water aircraft projects. It is being built by whom? Kolkata. Okay. Messrs GRSC Kolkata for the Indian Navy. So this is the company that is building it. पहली ship कौन सी थी? INS Arnala. So INS Arnala was the first one. And INS Androth. Monica, you must be aware of these things since you have a Navy background. Androth is known as the most silent ship. Okay, it is the most silent ship. It draws its name for the largest and longest island. Androth Island, ये कहाँ पे है? ये भी आपको एक information है. Lakshadweep archipelago. ठीक है? Androth is one of the islands in Lakshadweep group of islands. So 2-3 things to remember here. Number one, which are the two anti-submarine warfare shallow water crafts? Number one is Arnala. The recent one is Androth. Then we have Androth का नाम कहाँ से आया? It is the Androth Islands, which is in Lakshadweep. Okay, fine. अब CBI के बारे में अगर आपको पता हो, it was formed on the recommendation. It was formed on the recommendation of Santhanam Committee report. Santhanam Committee report, 1962-1964. एक और ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी सांथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे. कैन एनीवन टेल मी? Can anyone tell me that? Yes, CVC, absolutely. CVC is the second organization. So CBI draws its powers from DSPE, 1946. So Delhi Special Police Establishments Act, 1946, though it draws its powers from this act, but it is not a statutory body. It only draws powers from this act. It is a body that is formed out of executive resolution. So it is a non-statutory, non-constitutional body. तो 1997 में विनीत नारायण जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट had fixed the tenure of CBI director to be 2 years. ठीक है, 2 साल फिक्स किया था. क्यों किया था? To secure to ensure security of tenure.
ताकि he cannot be just moved away at the whims and fancies of the executive. All right. Next we have India-Japan relations में क्या देखते हैं क्या है यहाँ पे. So Japan will promote Bay of Bengal, Northeast India industrial value chain concept. So Japan has already been involved in lot of projects like the DMIC, Delhi Mumbai Industrial Corridor, and several other projects. We also have tie-ups with Japan with respect to the Shinkansen system. So likewise, other systems as well. Okay, so what are the exercises that we have here? One is the Dharma Guardian, which is an army exercise with Japan. Veer Guardian with the Air Force. Milan Jimex with Navy, and also there is a Malabar exercise as well. So Japan's concept, we have been talking about in our previous lectures about FOIP, that is Free and Open Indo-Pacific. Okay, Free and Open Indo-Pacific. So what the idea here is? So basically, we know China is trying to increase its hegemony in the Indo-Pacific region. So India, Japan, Australia, and the United States, they're trying to counter the Chinese aggression with more, effective alliances in this region. So FOIP is that concept in this regard. Okay, India will also be. So it is complement to India's Indo-Pacific Oceans Initiative. So India का क्या initiative है? IPOI, that is India's initiative. ठीक है. इस साल क्या हुआ है? G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडिया के पास. और G7 की प्रेसिडेंसी जापान के पास. ठीक है. That has been the thing. India has been the largest recipient of Japanese ODA, जो official developmental system, वो हमने पहले बात की DMIC और other projects में. जापान सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स या जो भी एड देता है वो इंडिया को देता है. ठीक है. अभी एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम याद रख लें आप. अंकटैड की रिपोर्ट है ये. ठीक है. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023. तो इंडिया का रैंक इसमें ग्रेटेस्ट परफॉर्मर रैंकिंग 67 पोजीशन बेटर देन एक्सपेक्टेड, फॉलोड बाय फिलीपींस. तो इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया है. ठीक है. तो ये रिपोर्ट बस याद रखो किसकी है. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट ऑफ द UNCTAD, अंकटैड. ठीक है. देन यू हैव दिस CSIR. It releases State of India's Environment Report. So this organization releases the State of India's Environment Report. Then we have Shaheed Divas. Shaheed Divas किसके दिन मनाया जाता है? The martyrdom of Bhagat Singh. ठीक है. 23rd March every year to pay tribute to Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, three people, one of the greatest martyrs of this country. The day is also known as Sarvodaya Day or Martyrs Day. Just remember this. You must have been aware of that as well. Just a reiteration of that momentous day. Next we have a topic from culture, खंडगिरी and उदयगिरी caves. तो ये कहाँ पे है, हमने थोड़ा सा इसमें मेन चीजें देखनी है. बनी थी कलिंगा किंग खारवेला के टाइम पे, 1st and 2nd centuries BC. ठीक है. कहाँ पे? भुवनेश्वर में. And what was the time period? 7th to 12th centuries in Udaygiri, known as माधवपुरम वहां विहारा. ठीक है. ये बुद्धिस्ट सेंटर था वहां पे. ठीक है. इंस्क्रिप्शंस कौन कौन सी स्क्रिप्ट में है ये भी याद रखना. ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड देवनागरी स्क्रिप्ट. तो ये सारे वहां पे गुम्पाज हैं. इनके नाम आप ना याद करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. बस आप ये देख लें कि कलिंगा किंग खारवेला, कलिंगा उस ओडिशा वाले रीजन को ही कहते हैं. ठीक है. जो उत्कल कोस्ट है अपना. तो 1st and 2nd century BC नियर मॉडर्न भुवनेश्वर. तो ये कब बनी है? ये आपकी उदयगिरी वाली, ये 7 से 12 सेंचुरी के बीच है. ओके. अभी आपने रिसेंटली राहुल गांधी जी की वो सस्पेंशन देखी होगी कि बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शन ही लॉस्ट हिज मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट. सो देयर इज अ केस, लिली थॉमस केस, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उसमें क्या कहा गया था कि जो सेक्शन 8(4) है ऑफ RPA, तो वो क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कन्विक्टेड लॉ मेंबर मेकर टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 months हैव लैप्स्ड. तो ये जो प्रोविजन था लिली थॉमस केस में, जो सेक्शन 8(4) है ना RPA का,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 84 सेज दैट जब भी कोई भी lawmaker means legislator, member of parliament or member of legislative assembly, he is convicted of an offense, तो कन्विक्शन की डेट से लेके 3 महीने के बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में इस क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन विल बी इमीडिएट। तो दैट वाज द लैंडमार्क जजमेंट इन लिली थॉमस केस। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉल बिफोर यू डिग। अभी आप देखते हैं कि अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स काफी आजकल अंडरग्राउंड होती हैं। तो कॉल बिफोर यू डिग इनिशिएटिव ये है कि you have to consult the telecommunications department so that those optical fiber cables don't get damaged and then it becomes all the more hassle. So Department of Telecommunications, ठीक है, Ministry of Communications ने बोला है to prevent this damage to underlying assets like optical fiber cables. So जिसकी वजह से कितना लॉस होता है पर ईयर, 3,000 करोड़ का लॉस होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉल बिफोर यू डिग करने से पहले कॉल कर ले। Coordination between agency. Next is DigiClaim. What is DigiClaim? Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ठीक है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल इन्होंने स्टार्ट किया है। डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल अंडर प्रधानमंत्री। तो ये आपको पता है ये स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है, जब कोई क्रॉप डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो उसमें दी गवर्नमेंट गिव्स सर्टेन कॉम्पनसेशन, जिसका आजकल हम एनालिसिस जो होता है रेकी होती है बिकॉज यूजिंग ऑफ द ड्रोन्स। दैट इज अबाउट इट। तो इट इज डेवलप्ड बाय डीजी क्लेम। किसने डेवलप किया? एनसीआईपी, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब नेक्स्ट है आपका बेडिक्विलिन। तो ये सिंपल सवाल आएगा, बेडिक्विलिन ड्रग किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है? तो आपका इसका आंसर होगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इट्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, जो नॉर्मल टीबी के सिम्टम्स हैं उसके लिए यू हैव ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोनायाजिड, रिफैम्पिसिन, पाइराजोनामेट एंड इथैम्बुटोल। तो ये चार चीजें जब वर्क नहीं करती हैं देन वी रिजॉर्ट टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बेडिक्विलिन। ठीक है, तो इंडिया ने रिजेक्ट किया है जॉनसन एंड जॉनसन बेडिक्विलिन ड्रग को प्रोड्यूस करती है, तो उसने पेटेंट को एक्सटेंड करने की बात की, तो इंडिया ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। पेटेंट मोनोपोली क्या है या पेटेंट एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या होता है? तो ये क्या है कि फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, दिस इज अ ड्रग ए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बेडाक्विलिन ओनली, बी इसको बेडाक्विलिन मान लीजिए, इफ इट इज अ ड्रग बेडाक्विलिन। तो ये किसने प्रोड्यूस किया? जॉनसन एंड जॉनसन ने। ठीक है, तो आफ्टर इट्स मैन पेटेंट पीरियड ऑफ 10 years, इट वांट्स टू स्टिल होल्ड द पेटेंट। वो क्या करेगा, इस बेडाक्विलिन में माइनर सा चेंज कर देगा, बी हल्का सा चेंज कर दिया कुछ कॉम्बिनेशन में, बट मेन ड्रग वही रहेगा, तो फिर से इसको पेटेंट के लिए अप्लाई कर देगा। So that is called, they renew the patent even after the requisite period has expired. So that is called evergreening of patents. Evergreening of patents. ठीक है, तो इंडिया ने इस चीज को रिजेक्ट किया है बिकॉज ये एक थोड़ा सा अगेंस्ट सोशल जस्टिस हो जाएगा और एक मोनोपोली ऑफ द कॉर्पोरेट्स हो जाएगा। सो एवरग्रीनिंग एस्टैब्लिशेस मोनोपोली एंड अंडरमाइंस कंपटीशन। India Patents Act 1970 prohibits such activities. Making the drugs affordable and promoting generic drugs is the objective of the medical services or whatever the medical provision of medical services. ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि बेडाक्विलिन किस चीज की ड्रग है, बेसिक टीबी के ड्रग्स कौन कौन से हैं, और जॉनसन एंड जॉनसन के रिलेटेड एवरग्रीनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट इज Candida auris. What is Candida auris? It is an emerging, it's a type of fungus. जो याद रखने वाली चीज है वही याद रखो। Candida auris is a fungus. It's a fungi. It's a fungi. टोक्यो में सबसे पहले मिली थी। इससे होता क्या है, इन्फेक्शंस होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है। बस दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर।
अदर सुपर बग फंजाई जो WHO ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे डाली, कौन कौन सी हैं? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है, ये सॉइल और डिकेइंग वुड में मिलता है। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी दे देंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है वहां पे। Aspergillus fumigatus, this is environmental mold. Then Candida albicans, this is found in human microbiota, ठीक है, माउथ, थ्रोट, गट, वेजाइना, स्किन, इन जगहों पे मिलता है Candida albicans. India has ranked 150 among 150 countries in world's press free, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। It is given by which organization? Reporters Sans Frontiers और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है आपको। और इंडिया का रैंक भी याद रख लो, 150 80 में से 150, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडोइक डिक्लेरेशन। विंडोइक डिक्लेरेशन यूनेस्को के द्वारा है, टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्लूरलिस्टिक प्रेस। तो बस इतना याद रखो, इट इज फॉर प्रेस फ्रीडम। विंडोइक डिक्लेरेशन, प्रेस फ्रीडम, यूनेस्को, जस्ट रिमेंबर दिस मच, ठीक है। Then you have export policy of biofuels. Biofuels हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो DGFT है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसने अमेंडमेंट की है टू द एक्सटेंड दैट एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम SEZs are allowed for fuel as well as non-fuel purposes without any restriction when produced using only imported food feedstock, ठीक है। तो ये चीज समझो कि क्या बोला इसने कि जो हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में, वहां पे आप फ्यूल और नॉन फ्यूल कैटेगरीज में एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो फीड स्टॉक है वो इंपोर्टेड, ठीक है। तो a license is required for both exports and imports of biofuels. So this is also an important fact. Biofuels में क्या क्या आता है आपका? Ethyl alcohol, petroleum oil and oils obtained from bituminous minerals and biodiesel, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज शारदा पीठ। ये कहाँ पे है? ये एक रूइंड हिंदू टेम्पल है, ठीक है। कहाँ पे? नीलम वैली ऑफ POK। शारदा पीठ इज अ ruined Hindu temple कहाँ पे? POK में है ये, नीलम वैली। वहां पे किशन गंगा रिवर है जो, जिसके साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसको भी नीलम रिवर कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है? वैली ऑफ माउंट हरमुख, बिलीव्ड बाय कश्मीरी पंडित्स टू बी अबोर्ड ऑफ शिवा, ठीक है। कमीशन किसने किया? ललितादित्य मुक्तापिदा, ये नाम याद रख लो कि he was the one who started this, and अल-बिरूनी ने भी रिकॉर्ड किया है इसको, ठीक है। ऑल राइट, तो ये दो तीन चीजें इसके बारे में आप याद रखो। नेक्स्ट इज वैदिक हेरिटेज पोर्टल। वैदिक हेरिटेज पोर्टल, government has launched this and a virtual museum called Kala Vaibhav for securing knowledge of India's ancient scriptures and manuscripts for the future through technology। बस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने हमारे जो एंशियंट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना है फॉर पोस्टेरिटी, फॉर द कमिंग जनरेशंस। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा इंट्रोड्यूसेस बिल टू ईज लैंड एक्विजिशन, ठीक है। तो क्या है ये देखो, लार एक्ट आपको पता ही है पहले, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, इट इज ऑल्सो नोन एज लार एक्ट, ठीक। टू ईज लैंड एक्विजिशन प्रोसेस फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपको ध्यान देना है। इट एम्स टू डू अवे विद द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ SIA, ठीक है। एक तो होता है EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इस एक्ट में से SIA का प्रोविजन जो मैंडेटरी था उसको हटा दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट थ्रू मेक इन ओडिशा इनिशिएटिव क्यों किया इन्होंने? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, तो जितनी कम से कम रिस्ट्रिक्शन होंगी तो उतना लोग ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक।
तो ओडिशा विल बी द फोर्थ स्टेट टू अमेंड आफ्टर गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है। व्हाट इज कैनलाइजेशन? आपने के बारे में सुना होगा कि कुछ सर्टन पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं वही फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्शन करती हैं। अब देखते हैं उसमें है क्या एक्चुअली कैनलाइजेशन। तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ इंडियन पोटाश लिमिटेड एज अ कैनलाइजिंग एजेंसी फॉर द इंपोर्ट ऑफ यूरिया टिल दिस ईयर। तो ठीक है, कैनलाइजेशन मतलब ये एजेंसी इंपोर्ट कर सकती है यूरिया का इस डेट तक। इट रेफर्स टू इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ सर्टेन कमोडिटीज ओनली थ्रू स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, कैनलाइज कर देते हैं एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को। गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि दीज आर द एजेंसीज व्हिच कैन engage or indulge in export import of fertilizers। क्यों किया जाता है ये? प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए और थोड़ी सी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। only done through trading enterprises। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आ गया स्टिकी इन्फ्लेशन। क्या है स्टिकी इन्फ्लेशन? It's a phenomenon where prices do not adjust quickly to changes in supply and demand, leading to persistent inflation। For example, किसी commodity A, कोई commodity A है, उसकी सप्लाई कम हो गई, ठीक है, बट डिमांड तो वही रही, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन विल गो अप। लेकिन अगर सप्लाई इंक्रीज भी हो गई तो वो इमीडिएटली यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी विद सम लैग, सो बिकॉज ऑफ विच देयर इज परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट लास्ट 5 साल से 4% के बीच में रहा। ठीक है। ओमुआ मुआ, व्हाट इज ओमुआ मुआ? अगर आपको पूछा जाए, इट इज अ कॉमेट। ठीक है, ओमुआ मुआ इज अ कॉमेट, फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट फाउंड विजिटिंग आवर सोलर सिस्टम। तो बस ये याद रखो, एक कॉमेट, कॉमेट का नाम है। लॉन्ग टेल्ड डक्स, व्हाट आर लॉन्ग टेल्ड डक्स? स्लिम कलरफुल डक्स विद लॉन्ग टेल्स कहाँ मिलती है? बस that should be your area of interest, Arctic and Antarctic, and their status is vulnerable। ठीक। what about smooth duck? smooth duck क्या है? एक माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? यूरेशिया और यूरोप दोनों जगहों पे, सम पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, ये दोनों डक्स कश्मीर में स्पॉट हुई थी। ठीक है, both these ducks spotted in Kashmir in close to a century, एक सेंचुरी तक पहले हुई थी स्पॉट कश्मीर में। तो बस इनकी लोकेशंस आप देख लो, ये वाली अंटार्कटिक और आर्कटिक, ये वाली यूरेशिया और यूरोप में। इसका स्टेटस वल्नरेबल है, इसका लीस्ट कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएम मित्रा टेक्सटाइल स्कीम। क्या है ये? तो इसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क वुड बी सेटअप। ठीक है, दैट इज पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स, पीएम मित्रा। प्रपोजल्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कितना एरिया चाहिए? 1000 एकड़ है। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल स्ट्रेटेजी होगी, 50% इक्विटी होल्डिंग ऑफ द स्टेट एंड 49% ऑफ द सेंटर। ठीक है, एंड इट विल कंबाइन द PLI2 स्कीम विद द मित्रा स्कीम। PLI क्या है? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक इम्पेटस मिलता है। तो ये जो हमारी MSME सेक्टर है, which accounts for about 75% of manufacturing GDP, 75% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग GDP, तो इसको थोड़ा सा एक ये बूस्ट करेगा। ठीक, मूर्स लॉ, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन IC विल डबल एवरी 2 years। दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसको याद कर लो। चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड, असम बेस्ड NGO जिसका नाम है तपोवन, उसको मिला है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड। क्यों मिला है? इन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी फॉर कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की ध्यान रखने में, स्पेशल एंड ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के ध्यान रखने में इनको ये मिला है। कौन सी? ये NGO है तपोवन। ठीक है, साउथ अटलांटिक एनोमली। ठीक है, a region on Earth's surface where the intensity of Earth's magnetic field is particularly low। ठीक है,
तो होता कैसे है, Earth's inner Van Allen radiation belts come closer to the planet's surface, causing an increased flux of energetic particles. This leads to penetration of solar energetic particles into Earth's atmosphere. तो क्या होता है साउथ अटलांटिक एनोमली में कि जो अर्थ की इंटेंसिटी है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है इस रीजन में। तो जो सोलर रेडिएशन का जब हमारे एटमॉस्फेयर में वो इंटरेक्शन होता है, तो उसकी वजह से ये फिनोमिना होता है। तो वैन एलन बेल्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, इट्स अ जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ विच ओरिजिनेट फ्रॉम सोलर विंड्स दैट आर कैप्चर्ड बाय एंड हेल्ड अराउंड बाय द प्लैनेट्स मैग्नेटिक स्फीयर। ठीक है, तो ये है कि फॉर एग्जांपल सोलर फ्लेयर्स आती हैं, होता है सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स, जिसकी वजह से ऑरोराज होते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स। सिमिलरली ये वैन एंडल बेल्ट्स की वजह से भी ये आपका जो साउथ अटलांटिक अनोमली होती है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज रियली लो, दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स द ओवरऑल थिंग हियर। डॉक्ट्राइन ऑफ गिल्ट बाय एसोसिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो पीएफआई के केस में हुआ था। ठीक है, दैट इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया गिल्ट बाय एसोसिएशन कि फॉर एग्जांपल आपकी सिर्फ एक मेंबरशिप, mere membership in a banned organization is a crime under UAPA. फॉर एग्जाम्पल आप किसी, जैसे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो रिफर्बिश वर्जन है वो पीएफआई है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ मेंबर हो इसके, आप कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो, तो यू विल बी कंसिडर्ड अ क्रिमिनल अंडर द यूएपीए। दिस इज बैन बाय एसोसिएशन, गिल्ट बाय एसोसिएशन, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर दैट यू डोंट बिकम अ मेंबर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट इज जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, लोकसभा ने पास किया है। तो क्या चेंजेस हैं, और क्या चेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, दैट इज टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स विल बी टैक्स हैविंग लेस देन 35% इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स जिसमें 35% इंडियन शेयर्स की इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं होगा, दैट विल बी टैक्स। और दूसरा है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, पेमेंट्स मेड टू क्रेडिट कार्ड्स फॉर फॉरेन टूर्स विल बी कंसीडर्ड अंडर एलआरएस एंड सब्जेक्ट टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो ये आपको आपस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेट इट गो। नेक्स्ट इज क्रिस्प। व्हाट इज क्रिस्प? रबर बोर्ड हैज लॉन्च्ड मोबाइल ऐप क्रिस्प। तो ये आपको बस याद रखना है, क्रिस्प किसने लॉन्च किया, रबर बोर्ड ने, टू इन्फॉर्म ग्रोअर्स अबाउट रबर कल्टीवेशन एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस। तो इतना बस रबर से रिलेटेड याद रखें। एंड डेवलप्ड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। अब इंपॉर्टेंट बोर्ड्स, ये क्वेश्चन आने के काफी चांस हो सकते हैं। डिफरेंट जो बॉडीज के बोर्ड्स कहाँ हैं, टी बोर्ड कहाँ पे है, कोलकाता। रबर बोर्ड कोट्टायम, कोट्टायम कहाँ है, केरला में, कोट्टायम इन केरला। देन कॉफी बोर्ड इज इन बेंगलुरु एंड टोबैको बोर्ड गुंटूर, आंध्र प्रदेश। ऑल्दो टी बोर्ड इज इन कैलकाटा, टी बोर्ड के 2 फॉरेन ऑफिस भी हैं, मॉस्को एंड यूएई। ठीक है, और इंडिया का जो टी हब है दैट इज असम है, सबसे ज्यादा वहां प्रोड्यूस होती है, बट सिंस ब्रिटिश टाइम्स हेडक्वार्टर वहीं से बना रहा है कोलकाता में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ LVM-3 with 36 OneWeb satellites. तो ISRO's heaviest payload rocket GSLV Mark 3, it is also known as LVM-3, ठीक है, carrying 36 OneWeb satellites on board, took off from सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ पे है, श्री हरिकोटा। ठीक है, अंडर OneWeb इंडिया मिशन। ठीक है, OneWeb मिशन क्या है, इट इज अ नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड, यूके का एक है प्रोजेक्ट, एंड दी NSIL इंडिया। हमने पता है NSIL इंडिया की एक वो है, 72 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। इन इट्स सेकंड मिशन इट प्लेस दिस मेनी सैटेलाइट्स carrying about 50 astronauts. So but just remember this OneWeb mission is for launching certain satellites in the low Earth orbit and launched from Satish Dhawan Space Center in Sri Harikota. Next you have biotransformation technology. What is this technology? It would digest plastic waste naturally
with the help of microbes and biodegrade waste without leaving behind any microplastics. ठीक है, ये है bio transformation technology. यूके बेस्ड स्टार्टअप ने किया. That's just remember this. वेस्ट को नेचुरली डाइजेस्ट करेगी और पीछे कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ेगी. What is depleted uranium? ठीक है, it's a byproduct of the process of creating enriched uranium, which is used in nuclear reactors and nuclear weapons. In comparison to this, it is much less radioactive and is incapable of nuclear reaction. However, due to high density, it's denser than lead. Depleted uranium is widely used in weapons and can easily penetrate armor plating. ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि जब यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं फ्रॉम U238 टू U235 हम बना रहे हैं जब, या फिर U232 या प्लूटोनियम या थोरियम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट एक लोअर ग्रेड यूरेनियम मिलेगा कॉल्ड इज डिप्लीटेड यूरेनियम, which is not suitable for weapon. It is not a weapon grade or reactor grade uranium, but it will be used for certain low grade weaponry, and it is potent enough to penetrate the armored gear that the soldiers wear. Okay. Then you have a Ravli Green Project, obviously Ministry of Environment. 5 kilometer buffer area around the hill range. कहाँ पे? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये 4 states में होगा. ठीक, just remember this. नेक्स्ट इज ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल. ठीक है, आरटीआई का शुरुआत कब से हुआ? 1986 में. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन मिस्टर पुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट freedom of speech and expression guaranteed under Article 19 of the Constitution includes right to information. ठीक है, it includes right to information. Why online portal? Section 6 of RTI stipulated that an information seeker had a statutory right to move the application to. This is just a simple idea that we should know. Nothing special in this. AFSPA, Armed Forces Special Powers Act. तो सेंटर ने डिसाइड किया है टू डिक्रीज द jurisdiction of disturbed area declared under armed forces in which states? Nagaland, Assam, Manipur. 1st April से. Since we are doing March current affairs, तो 1st April से they are decided to reduce these areas. ठीक है, डिक्लेयर कौन करेगा? Can be declared by गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट और यूटी और बाय सेंटर. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आफ्सपा डिक्लेयर कौन करेगा, स्टेट, यूटी और सेंटर. प्रेजेंटली कहाँ है ये? नागालैंड की 8 में से 9 में से 8 डिस्ट्रिक्ट में, असम की 8 डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर में है थोड़े एरिया को छोड़ के, और जम्मू कश्मीर में है और अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी होल में नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा है. इट इज मोस्टली इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर. ठीक है, New initiative OCEN, Open Credit Enablement Network. The government is developing the OCEN, which will lead to competition among various banks for giving loans to a person lower than the cost of credit. ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है, डेवलपिंग द OECN नेटवर्क, ओपन क्रेडिट नेटवर्क. कंपटीशन अमंग वेरियस बैंक्स थोड़ा सा ये बढ़ाएगा. ठीक है, फॉर गिविंग लोन्स टू people with lower cost of credit, and propel the credit to GDP ratio from 57% to 100%. तो ये रेशियो को बढ़ा देगा. आगे आपका आ गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम. हम सरकार काफी बार ये प्रोजेक्ट की बात करती रही है कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, द यूनिवर्सल बेसिक इनकम, दैट इज द रिक्वायरमेंट, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी हमारे देश में सबके पास नहीं है. हमने देखा है कि यूरोप में, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन कनाडा, इन द वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सो टू से, they have a very good system of social security. They have entitled payments. In fact, certain countries in the Scandinavia, I guess Sweden, they also started the initiative of UBI, Universal Basic Income. तो इसमें क्या होता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि सबको एक बेसिक मिनिमम एक इनकम सरकार देगी, irrespective of their financial status. But in Indian context, that may not be possible because of a huge population. So Tamil Nadu में इस sense में क्या किया? Let us see. Tamil Nadu government announced that 1 crore women, including street vendors, fisherwomen, construction workers, domestic helpers, will receive 1,000 per month. ठीक है, तो ये एक तरह का UBI दे रहे हैं women को. Around a crore women will be given this. That is the thing. उत्तराखंड
has started a QR case project to prevent littering. Littering आपको पता है गन फैलाना इधर उधर, तो उसने QR case project start किया है. क्या होगा इसमें? Unique waste disposal system to prevent littering in the Char Dham Yatra route with plastic bottles and packets. Generally, we see whenever you also visit to tourist centers, we see that people litter around, they throw wrappers here and there. So that consciousness has to increase, that we leave the places cleaner than we enter them. So rather not make them ugly and cause environmental pollution. So ये एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. Scholarship for folk artists. The Ministry of Culture is implementing a scheme by the name of this one, okay, to protect all genres of street artists. It has 3 components. क्या component है इसके? Award for scholarship to young artists, 5,000 per month. ये बस इतना याद रखो कि Ministry of Culture ने एक स्कीम लॉन्च की है. इतनी डिटेल मत याद रखना. Just not required for the exam. Just remember 3 sub schemes है. Young artist, ठीक है, रिसर्च के लिए है, और टैगोर नेशनल फेलोशिप. Next, we come up with India's first bauxite certified reference material, CRM. ठीक है, तो क्या है ये? नालको, आपने नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्होंने इंडिया फर्स्ट ये डेवलप किया है. नाम क्या है इसका? बार्क 1B1201. तो ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है, 5th CRM of this kind in the world. क्या होता है? It is a standardized sample of bauxite that has been certified to have a known and consistent composition है. There is no heterogeneity in it. It is more homogeneous. So CRMs are calibration standards for analytical methods, instrument performance and data quality. So बस this is the important part. बार्क और नालको ने collaborate करके ये बनाया. बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम आपको पता है बॉक्साइट से निकलता है. तो बॉक्साइट इज अ sedimentary rock, not an igneous or a metamorphic. High aluminum content, world's main source of aluminium and gallium. तो आपको बॉक्साइट से 2 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको. फर्स्ट इज aluminium and second is gallium. Gallium is a slightly heavier metal. ठीक है. नेक्स्ट आ रहे हैं आप एफिनिटी टेस्ट्स पे. Supreme Court of India has ruled that an affinity test which measures an applicant's knowledge of a particular tribe or caste, custom, ritual, traits cannot be the sole determinant of a caste. ठीक है, समझ गए क्या मतलब? फिर से पढ़ो. Measures an applicant's knowledge of a particular tribes, customs, ritual. अगर जैसे आपको किसी ट्राइब के कस्टम, नॉलेज, रिचुअल्स पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ट्राइब को बिलोंग करते हो, आप एसटी स्टेटस नहीं ले सकते वैसे. तो है क्या ये? इट इज अ स्टडी ऑन अ कास्ट और ट्राइब्स क्लेम्स बेस्ड ऑन अ पेक्यूलियर एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोलॉजिकल और एथनोग्राफिक. ठीक है, ये उनके ट्रेड्स है, आप में स्टडी किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, you have those ethnocentric traits? Do you have those anthropological features? Your skull size, your the size of your limbs, and all these things, these will be taken into account before doing this affinity test. Why it can't be the sole criteria? Because an applicant's knowledge of SC/ST traits may not be an accurate measure of his belonging to that tribe. आपको उस tribe के customs तो आप सीख भी सकते हो, so that cannot be the sole. So you need these anthropological, your ethnocentric, your genealogical studies will need to be conducted to ensure your ethnic combination there. Berry borer infestation. क्या है berry borer infestation? कॉफी प्रोडक्शन के केस में होती है. ठीक है, स्मॉल बीटल called coffee berry borer which lays eggs inside coffee berries. ठीक है, तो एडवाइजरीज फॉर अटैक ऑफ बेरी बोरर इन रोबस्टा. इंडिया में रोबस्टा कॉफी पॉपुलर है, रोबस्टा कॉफी. ठीक है, सो ब्रोका ट्रैप्स एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल बेरी बोरर पॉपुलेशन. ठीक है, ये आप इसमें यूज करते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज pellet beam propulsion. A new propulsion system called as pellet beam propulsion
has been proposed that could potentially beam a heavy spacecraft outside a solar system is less than 5 years. ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जिसमें क्या करते हो कि heavy spacecraft है, उसको you have to like kind of shoot it outside a solar system in less than 5 years. So here, less than 5 years because we are talking in terms of light years. So it's many light years away. So 5 years is a very small time scale in the astronomical scale. If we talk about the astronomical time scale, 5 years is like nothing. Okay. So propulsion system क्या है sense में? It is a machine that produces thrust to push an object forward. Obviously, when a spacecraft goes, it has its propulsion, it has its exhaust, which kind of propels it. The burning of a chemical fuel, it pushes on the ground, and that's why it pushes up. Okay? The working of a pellet beam system. What is this? So it involves tiny microscopic pellets at a spacecraft to propel it through space instead of using traditional chemical fuel rockets. ठीक है, pellets use करते हैं इसमें, pellets जिनको नीचे push किया जाएगा, तो वो pellets की वजह से force generate होगी, that will propel it. So it requires 2 spacecrafts. ठीक है, the pellet beam concept was inspired by breakthrough shot initiative working with light sail. ठीक है, चलो आज हम करंट अफेयर इतना करेंगे, इसको कल कंप्लीट करते हैं. जीएस हम 15 मिनट्स के बाद जीएस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, so this should be it for today. Tomorrow we'll complete March, and you will have a test of your 3 months current affairs on Saturday. Okay, every Saturday we will be having tests, and 5 days a week we'll be having classes for the current affairs. So कोई doubt है तो आप पूछिए, otherwise we'll conclude here and then we'll start the GS class in some time. Any doubt, guys? Sir, I had a general doubt regarding the universal basic income. Sir, so is this a concept of universal basic income like relevant? The point which I'm trying to make is like if we consider in India, like as a whole, if we see, then there is a feeling of hard work in the people in general, right? So if we give the universal basic income, so then that feeling of hard work would be like reduced to some extent or not. Like how can we look on that perspective? Like if we are giving 1000 rupees every month to people, then they would be like, okay, we are getting the money and then we do not need to do something. Like that sort of thought process might get developed in people's mind. Just a general question I wanted to ask. Yeah, see, your question is fine, but see, we have to understand, for example, we have to think about those sections of society for which 1000 rupees is like something that is a huge thing. And as far as, talking about the incentive to work being reduced, the intention to work harder, that we are getting these doles, we don't need to work hard. Actually, in these far-flung areas, particularly, it is going to benefit women and the underprivileged, because even today also we see that women are being discriminated in certain far-flung areas. They don't. The daughters are generally discriminated sometimes. They are not given money to, maybe transport is becoming a bigger problem. This initiative of free bus service we have seen in many states for women. It is actually a kind of enabler, because commutation becomes a problem, because the parents would not be willing to, they would जाओ आप पढ़ लो लेकिन वो पैसा नहीं देंगे. So that is kind of a little kind of SOP that helps them, stops you're giving them. और दूसरा जरूरी हमें सबको नहीं देना है. For example, someone who is actually needy, so poorest of the poor people. तो वहां पे even if a small medical emergency comes up, उनके पास उतने पैसे भी नहीं है वो दवाई से अपना इलाज करा ले, तो वो थोड़ा सा देखो, there will be certain, we have to strike a fine balance here. We have to encourage them, obviously. I'm all for empowerment, empowering the people, empowering the citizens, so that teach a man how to fish. Give a man a fish, he will eat for a day. Give a man how to fish, he will eat for the life.
that is definitely a good idea. But at the same time, till we build those capacities in our population, so that they are more self-empowered and they are able to take their own, financial decisions. Till that time, I think we do need to kind of aid our empowerment initiatives with certain SOPs like this. So I think it is required. It is required for people who are actually hard done through the financial issues in the far-flung areas, particularly tribal areas. So I think this much we can do. When we can waive off thousands of crores of, write off the loans of the big industrialists, why not just help these people out? At the same time, building capacities through socio-economic development, creating more schools, building infrastructure, and through the SHGs. So see, all these things, we cannot just close our eyes to someone who is dying for lack of money. We have to ensure that हाँ हम उनको empower कर रहे हैं, उनके लिए initiative start कर रहे हैं, vocational program start कर रहे हैं, but साथ में हमें ये भी करना है कि ये भी है कि कोई भूखा भी ना मरे. कोई फार फ्लंग एरिया में कोई लड़की है, वो पढ़ना चाहती है, उसको पैसे नहीं है, उसकी वजह से वो ना पढ़ पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. या कोई बच्चा है, कोई मतलब कोई बीमार है, वो दवाई की वजह से मर जाए, वैसा नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए आई थिंक थोड़ा सा इस तरह के इनिशिएटिव भी शायद मुझे लगता है कुछ हद तक जरूरी है. Right, sir, understood. So, basically for the needy people, this scheme would be the best to. Obviously. Why would we do it for the affluent? There have to be some Right. caveats for that. Yeah. Yes, sir. Thank you.